वो तो उन्होंने लिखा ये मुंतखब हो गए, अनअपोज्ड, मगर अनअपोज हो गए, मुंतखब हो गए जी। मगर उस मीटिंग में ये वो जो आप उसको कहना पसंद फरमाएं, इलेक्शन में 500 लोग थे, 1000 लोग थे, 10,000 लोग थे, मतलब कितने लोग थे? My lord, we don't know because once the venue was इन्होंने बताया कुछ या नहीं बताया? नहीं, when the venue was announced that the elections are going to take place टोटल मेंबरशिप आपको पता है कितनी है? in KPK, वो इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली? in KPK, नहीं, किस जगह, कौन से, किस was होटल में, the दफ्तर में? election commission wrote a letter to them. नहीं, Yes, एक्चुअली हुए किधर? Venue of the election. reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangement, please communicate to us where these elections are आपको taking नहीं place. पता They didn't communicate to us where the elections were आपको taking नहीं place. पता है? No sir. हम इनसे पूछ लें खान साहब से। जी, बिल्कुल। खान साहब, इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू, कौन सा था? नहीं नहीं, वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके? हाँ, कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है। हाँ, क्रिकेट ग्राउंड है। स्मॉल विलेज। अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। चिमकनी में कोई जगह है? छोटा सा गांव है। क्या नाम है? रानो गढ़ी। ये किधर है ये कोई आपका नोटिफिकेशन था कि हम इलेक्शन फला तारीख को करने जा रहे हैं चमकनी रानो गढ़ी में, कि जो मेम्बरान आना चाहें उधर वोट डालने के लिए? वो किस सफ़े पे है? ये रानो घड़ी का इंतखाब क्यों खास तौर पे हुआ है? तो एक छोटी सी जगह गांव है, अननोन प्लेस है। नहीं, ये जरा बताएं, कोई नोटिफिकेशन है ऐसा रिकॉर्ड पे? No sir. आप बताएं। What we नियाजुल्लाह साहब, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कहीं ये जगह हो रही है इलेक्शन, तो मेंबरान को पता तो चले ना वोट डालने कहाँ आएंगे वो? this was 90 page 93. 93। Yes my lord. ये लेटर है जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के लिए इन्होंने लिखा चीफ इलेक्शन That in compliance of the order dated 23rd November, 93 page, part 3. PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced a schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this Honorable Commission could be complied with. Sir, if you नियाजुल्लाह साहब, इसमें आपने तो चमकनी का जिक्र नहीं किया था, तो आपने कहीं पेशावर में हो रहे हैं इलेक्शन। पेशावर केपी नहीं, तो पेशावर तो एक बहुत बड़ा शहर है, तो कहाँ आपको सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, कहाँ लिखा है ये? आप वो तहरीरी बताइए ना, जवाब वो किधर बताया आपने? सिर्फ जगह बता दें, वेन्यू कोई है, कोई कागज रिकॉर्ड पे हमारे? नहीं तो अच्छा, ये सवाल उठेगा कि आपके मेम्बरान को पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाके वोट डालें? भाई, इलेक्शन कमीशन तो आपके मेम्बरान नहीं है ना, तो एक रेगुलेटरी। आप जरा सुन लीजिए ना, आपके अपने मेम्बरान जो हैं उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं वोट देने अपना? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का। चलिए खैर, आगे बढ़ें। My lord, if your lordship may graciously turn the page, I am directed to refer of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP
dated 30th November 2023 regarding above noted subject, and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such, as well as through letter dated 30th November on same day, copy enclosed, to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP, but prudently this is required in the present security environment where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day, and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar which have faced attacks on LEAs and others' liberty. It is however noticed that no response has still been received, and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My Lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us, and then if your Lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November, page 96 and 97. I'll read two letters. 97, if your Lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject, and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of parties. When you write at the top, number 1, we say, tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No, sir. We got no reply to this letter. तो देखिए, एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेम्बरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो। आप अपने वक्त पे जवाब दीजिए ना, हम सवाल आपसे पूछ चुके हैं मगर आप जवाब नहीं दे रहे ना, बहस ना कीजिए। हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है, कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे, ये तीसरी बात है बस। अब आपकी आवाज माइक पे आ जाइए ना। कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को, कि हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल वोट डालने जाना चाहे जी, तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने। तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर, ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा, और वहाँ लोग पहुंचे। आपके मेंबर्स हैं ना न्याजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी। आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से, सूबे से भी लोग आने थे ना जी। तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन, सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है। अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज, नहीं मैं वीडियो से नहीं, आप वीडियो की बात नहीं ना, आप ये वीडियो की बातें छोड़िए, उस पे केसेस नहीं चलाते हैं हम, केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं। ये आप लोग वीडियोस बाहर जाके जितने मर्जी चला लें। उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतना आपके तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म। इलेक्शन कमीशन है ना, उसमें वो आपसे में पे देंगे, क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है। अब वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है, तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी, या आपका अपना वो है, कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे। चलिए खैर, आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा आगे। जी भैया आप सिंपल जवाब कर रहे हो, हमसे पूछिए वेन्यू कौन सा मौजूद है, हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से। भाई ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं, हमने उनको तहरीरी हम आपको दे देते, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटीरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपकी अगर सिंगल पैनल आया, मेंबरशिप कितनी है आपकी, हमने उनको कहा कि मेंबरशिप कितनी है आपकी, 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड, ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन
इलेक्शन कहाँ योर होंगे ऑनर, और पूरे किस मुल्क को तारीख पे पता था, होंगे। हर जगह पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इवन। अच्छा आप रहने दें। अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे दें ना, बहस आपकी सुनेंगे। Yes. चले आगे बढ़ी मखदूम साहब, सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना। एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना। इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। एक आप- सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए। सर मैं एक या उनकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लॉर्डशिप एक आपकी मैं जजमेंट नहीं आपसे सुनूंगा भाई, आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप अब आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े ठीक है, हैं। यू आर ए रिस्पोंडेंट, ठीक है। आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जामात आपके सर पे है, नहीं है। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, वो नहीं, अलग मैं बात है। वकालत नहीं आपके कर रहा। वकील मैं- कौन हैं? मैं- आपके वकील कौन हैं? हामिद खान साहब है। तो फिर वो मौजूद हैं। ठीक है। शुक्रिया। My lord, I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका, आइन में जो इनके आइन में इंदराज है, तरीकेकार क्या होता है? my lord, that was Federal Election Commission is provided. ये इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे, जी 5 सर, पॉइंट, page, तो इसमें sir, page 140 I was reading to your lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये रेलिवेंट क्लॉजेस बताइए कौन से हैं? ये सर आगे देखें, then on page सर, इसमें 142. नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है, वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? No, sir, it's not there. in How the the Constitution. nomination form will be given to the नहीं मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेस है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी सर। Sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142. If your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned, and if your lordship sees नहीं ये तो central organization is मखदूम mentioned. साहब से My ये lord. पूछ रहे हैं कि बता दें तरीकेकार क्या? ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192, my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है पेज 90 पे, ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है Yes, my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पे नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है जी, अकेली। अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023। Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ हुआ इनकी Yes, madam. सिग्नेचर से। Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं, प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the Constitution Commission. But what about where is this letter? Because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना। जी सर। अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स। returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग अलग। 4 है सर। फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड। दे आर 10 इन नंबर। ये कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट कंटेस्ट। Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panel don't have any records.
विड्रॉल पैनल्स की बात करें, विड्रॉल Withdrawal कहाँ है withdrawal? हमारे पास नहीं है ये, we don't even have a letter showing कि बाकी पैनल्स ने withdraw कर दिया। Announcement कहाँ है? जी So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Sikandar, you have taken my book, yeah? That's my lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं आप, सर, अगर आप इसको रिपीट ना करें कुछ। नहीं सर, ठीक है, अगर आप सर पैराग्राफ 2 ऑनवर्ड्स देख लें, एंड देन द फंक्शंस, एंड देन पैराग्राफ। लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके, इस इलेक्शन से पहले? ये कौन से इलेक्शन? पीटीआई के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन 19 जून 2017। 19 जून 8 जून 2, तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए। What happened was, नहीं, वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए। my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428। ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, relevant page 435, paragraph 424. 435 paragraph. Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. Provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved and ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture, it would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may Take different dates for that election. each of these letters which are mentioned. कंक्लूड क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्या रहा है? Yes, sir. Given to them and वो वाला पोर्शन पढ़ देना। my lord, I'll read the कंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं? letter. उन्होंने कहा है कि वो तो आगे eventually पढ़िए यही ना। करते हैं। पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना? जी सर। इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना। All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is reputed objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final vision of section 215(5) of the election act, 215(5) सर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold आगे elections. पढ़िए. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penalty of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड. In
Then writ petition number 5791 of 2023. 5791 1 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. So, WP number 1171 71 of 2023. दोबारा कहिए 81171 of 2023. जी This, my lord, is at page 644 of your lordship's file, पार्ट 3 part 3. Yeah, this is not page 644 644. Copy वालों को ये रखा है। This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ ये जी सर. ये पढ़िए ऑर्डर Sir, through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to WP is 332 this, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? पेज 2 ऑफ दिस ऑर्डर 656 इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस. ये सर ये 657 657. इसमें लिखा है ना बीच में when 57, sir. अच्छा ये ऑर्डर तो फिर ये 15-12 का आपने पढ़ा है जी सर. 8-12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है. इसमें भी WP 33 लिखा है जी. When confronted with the, ये 332 WP क्या चीज है? sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters about. अच्छा ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है और वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट My lord.